Yeah, hello, good evening, everyone. So, we will be starting our today's session soon. Okay, so give me a moment to share my screen. So, today is week 12, and today is our last session. Okay, uh, so before that, let me. ठीक है हाँ, जो भी चार्ज करना है क्या और कुछ कर लो थोड़ा देर. Okay, so in today's session, चालू है ना चालू है हाँ चालू है. उसको लाइट क्यों नहीं आ रहा है फिर Okay, so in today's this week we have learned about sentiment analysis and positive or negative sentiment analysis. Where do we use it? So we use it in the positive or negative movie review, and also we have used in product review, public sentiment, or in politics, or in predicting the poll, or this kind of application. Also, we have seen that frustration of callers to helpline and stress in drivers or pilot. So if we want to predict that if a pilot is in stress or not, or what is the confusion in students taking a online class, so this kind of sentiment analysis we can do using these models. Then there is states topology. That means you have what is your emotion. Are you proud, angry, sad, or fearful, or what is your mood right now? And interpersonal stances, like how is the connection between you and you and the person is sitting in front of you. Yeah, is it friendly, is it uh, is it are you maintaining some distance, or is it cold, warm, or supportive, or contemptuous, or what is the attitude of you on the other person, like are you liking it, are you loving it, are you hating it, valuing it, and deciding it. And also like the personality traits, this kind of these are the effective states of the sentiment. So you can see that there are so these are categorized basically. So categorized on emotions, mood, interpersonal stances, attitudes, and personality traits. And then there are many categories here also. There are hierarchies. Okay, now in sentiment analysis, is the detection of the attitudes, enduring effectively colored beliefs or disposition toward objects or person. The complete task is to the source of attitude, the aspect of attitude, and the type of attitude, and then text containing the attitude. Okay,
So you will be given a simple sentence like, is the attitude of this text positive or negative, and you have to find out the rank you want to give based on the positive or negative. Okay. Then the advancement of that this sentiment analysis detect the target or source or complex attitude types. Okay, so here is an IMDb movie review. Based on this review, you have to find out the model which you will develop. You have to that need to find out that it is a positive review or a negative review. Okay, so what are the baseline algorithm? What you have to do to find out from this movie review that it is a positive mm, movie review or a negative movie review. So you have to find out the you have to do the tokenization first. So you will find out the words, then you have to do the feature extraction, then you have to use a classification algorithm like naive Bayes, maxinet or SVM. Okay, so you will learn that based on this classification. So you it will be a supervised learning. So based on this feature extraction, so the feature will be extracted from the sentence. Based on that, it will be like it will be given that what kind of sentiment it is there will be a corpus of text, like it is supervised. So there will be a corpus of text, so that it shows yeah. Okay. So there will be a corpus, so which will show you that it is a what it is a positive review or a negative review. Then in tokenization you will find certain issues while implementing, like capitalization, then word lengthening or handling emotions. Okay, then like handling negation means I didn't like the movie and I really liked this movie. Okay, and not to every word between negation and following punctuation. Didn't like this movie, but I liked some. I like the songs. Okay, so so there are and not to every word between negation and following punctuation. So if you do this, then it will become a positive one. Okay, don't and not. Okay, then we have the naive Bayes classifier, and where the naive Bayes do the compute the same equation. So you have to you will find the maximum of the probability from all of the probability, where you want to find out the probability of xi where cj is given. Okay, so you have to first remove the duplicate from the document, and then you have to you have to compute the probability of that word or the sentiment using the naive Bayes classifier. Okay, so if a sentence is given to you and you have to find out that it is a positive sentence or negative sentence, then what you can do that you have to find out the don't we have to find out the most important words here, like worst, best, love, hate, etc. So in a small scale experiment, it has shown that uh, some this is the some proposed word list, positive or negative, and then in statistical based models are predicting the positive and negative was more correctly. Okay. Then we have in second we have seen that the sentimental analysis, the affective lexicons. Okay, sentiment lexicon, the general inquiry, then MPQA subjectivity cues lexicon, senti wordnet, LIWC or linguistic inquiry and word count, where we have seen the general inquiry, where in that corpus you have positive 1915 word and negative 2291 words. Then there are strong versus weak words, active versus passive words, and overstated versus understated word. So pleasure, pain, virtue, vice, motivation, cognitive orientation, etc. You can see that for that whatever the word is, so if this is negative word, then negative is written. Okay, it is a strong word, then strong is written. If it's a weak word, weak is written. Okay, and if a word is not a strong word, that doesn't mean that it will be a weak word. Okay, like that. Okay,
Then we have seen that we have seen that what are the other lexicon. So these are the other lexicon, that MPQA subjectivity cues lexicon, which has 6885 words and 8221 lemmas and 2718 positive and 4912 negative word. Each word annotated for intensity, strong word or weak word. Okay, so in this Bing Liu opinion lexicon, you will be seeing the 6,000 word, among which 2,000 is positive and 4,000 is negative. Okay, and this linguistic inquiry and word count LYWC, it has 2,000, around 2,500 word, which is distributed among 70 classes. Okay, which has effect in negative emotion and positive emotion, and also cognitive processes like tentative, maybe, perhaps, case, and inhibition like block constants, and come with a so it is basically a paid one. Okay, so this is a dimension. We have some questions based on this figure also, like valence and arousal dimension. So valence means like sadness or relaxation. Arousal means you are you are excited or you are angered. Okay, you are happy in excitement or you are angry in excitement. Okay. Okay, so this is about the these are the yeah, these are the lexic. Okay. Hmm. Yeah, so it is given, it is saying the lexicon of valence, arousal, and dominance, the pleasantness of the stimulus, the intensity of emotion provoked by the stimulus, and the degree of control exerted by the stimulus. So it is given by a rank. 9 means stimulated, 1 means relaxed. So this is like that. Yeah. And in the next week we have seen that learning effective lexicons. How can we learn effective lexicon? That adjectives conjoined by and have similar polarity, like fair and legitimate. That means they have similar polarity. Fair and brutal, they have similar polarity. uh, Sorry, this fair and brutal are in opposite side. Okay, one is arousal and one is valence. Okay, now learning sentiment lexicon. How can we learn it? Yeah, so it can be done by the label set of adjectives. So today everything you are doing it statistically, so you must need a labeled data. So that's why there are positive cases and negative cases. So in step 2 we have seen the expand seed set to conjoin adjectives. So these are the so was, adequate, and okay. So basically what you do, that you construct a graph based on your word, that polarity similarity is assigned to each word pair. Like nice, helpful, they are polar. Like when you say that like cats and dogs, so they are same polar words. So nice and fair and classy. And if they are not in same polarity, like fair and corrupt is in different polarity. So they are basically assigned as a word pair. Then you do the clustering to partitioning the graph into two, so that you can find out the positive and negative words. So so what is the output of the polarity lexicon? So positive, bold, decisive, disturbing, generous, these are the outputs, and negative, ambiguous, cautions. So these are the negatives. And in Turner algorithm we have seen that extract a phrasal lexicon from reviews, learn polarity of each phrase, and then rate a review by the average polarity of the phrases. So Tarney algorithm helps us to actually analyze a review, and then from that we can learn the polarity of each phrase. Then we can rate between 1 to 5 of a review. Okay. So okay. So 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 while measuring the polarity of the phrases, it has seen that positive phrases co-occur more with excellent, negative phrases co-occur more with poor. How to measure the co-occurrence? Okay, so then the formula is given by point-wise mutual information, polarity between two word pxy, log of
pxy by px into py. Okay, so this is the formula of the point-wise point-wise mutual information. Okay, and how to estimate the PMI? Like how can we estimate that? If it say if I have to estimate it statistically, how can I do that? Okay, so it can be done using query search engine, where P of word 1 and word 2 polarity between word 1 and word 2 is estimated by hits that word 1 near word 2 by n. Okay, then this is the polarity of phrase, that polarity of PMI of phrase comma excellent minus PMI of phrase comma poor. Okay, so this is kind of base rule kind of approach. Yeah, then in next week we have also seen that computing with effective lexicons, where we have seen that learn word sentiment supervised by online review score. uh, Here we want to analyze that how likely is each word to appear in each sentiment class. Okay, so we have a sentiment class and we have to find out that in first class how many words are there. How likely is each word to appear in each sentiment class? Let's take count bad, 1 star, 2 star, 3 star. So bad come 1 star more than 1 lakh time, and bad came in 10 rating 10, which is the highest rating also, a significant amount of time. Okay, so analyzing the polarity of each word in IMDb, you know that all IMDb is a movie rating software. So we have to found out that uh, if there is a word bad and it is in and you have given a review uh, which got 1 star, 2 star and 3 star, then how many times it will appear in 1 star review, how many times it will appear in 2 star review, and also we can see that in 1 star review, which basically the bad one, इसमें चार्ज हो रहा है, मेरे में तो हो रहा है, शायद इसका चार्जर ये देखो मेरे में हो रहा है, बंद हो गया, हो रहा है साला, ये फिर इसमें ही नहीं हो रहा है फिर। नहीं मेरे में नहीं हो रहा है, बंद कर दिया क्या तुमने? नहीं, तो वही बोल रहा हूँ, इसमें तो हो ही नहीं रहा चार्ज। अच्छा इधर तो 1 मिनट यहाँ पे लगा के देखता हूँ मैं। हो रहा है, इधर तो एक बार चार्जर निकालो, इस पे लगा के देखते हैं। Okay, so this is the formula for likelihood instead of counts. Okay, हो रहा है, अभी तो मेरा हो रहा था. Okay, fine. So this is I think this was the summary. So we'll see more later. Okay, next we can try to solve some questions for this week. Yeah. So you can try it solving by. So this is the first one. Okay. So can you try it? ये मोबाइल भी चार्ज नहीं कर रहा है। ये अभी तक मेरा हो रहा था जब मैं इसे खोला. क्या बता भाई, एक बार निकाल के वापस आ जाओ क्योंकि मैंने अभी उस पर भी टेस्ट किया, तो मोबाइल भी नहीं चल रहा है। मैं तुमको जब खोल के दिया तभी हो रहा था. हो रहा है? हाँ. अच्छा 1 मिनट लेगा, क्योंकि वो नहीं अब चल रहा है तो वो इसमें भी चल जाएगा। नहीं, एक बार वापस इसको लगाओ। लूज कनेक्शन वगैरह कुछ हो रहा है क्या? नहीं आई चल रहा थिंक है ना? ना, इसमें कुछ तो दिक्कत है, तुम इससे मत करो.
व्यूज इसमें रिव्यू बनी है उसको पड़ा है उससे पहले मैं जिसमें रिव्यू किया था उसमें दोनों का तीन मेरे को दिया तो बाकी में तीन दिया दोनों ने तीन से चार कर दिया कितने में सीन रहता है क्या हाँ ये लगा वो इसमें होता है तुम्हारे किसी पे लगा हो ना पता नहीं कैसे किसी में नहीं चार्ज हुआ नहीं एप्पल का स्पीकर तो नाटक करता है मैंने इसका फोन चार्ज हो रहा है क्या वाइट नेट आ रहा है क्या हां आ रहा है मतलब बोलता है गरीब वाला फोन गरीब में चार्ज नहीं चलेगा सही बात है आईफोन में आ गया ये बात गरीब और एक ही बात है मैं नहीं बोल रहा मैं सच बता रहा हूँ मैं एक महीने तक आपको क्या ऑफर किया कोई अगर सेम लाइन में खरीद मैं अभी का भी एक महीने में कैसे कोई सेकंड मार दे बस एक महीने में मैंने ऑफर किया था एक महीने में 20 पर तुम ले ले उधर अब तो मैं मेरे को उस टाइम पे इतनी वैल्यू में यार मेरे को सैमसंग का एस सीरीज ले सकता था अब बहुत अच्छा मैं लिटरली आई एम रिग्रेटिंग दिस डिसीजन यार साला एक पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाते बहुत नहीं होता है साला लैपटॉप खोलता हूँ भाई पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है कोई के वेबसाइट में कुछ होता है ना तुम्हारा पीडीएफ खुल जाएगा जैसे उसमें एक खुल जाएगा उसका डाउनलोड ऑप्शन ही नहीं आ रहा अच्छा और इसमें एक और चीज़ है ना कि मान लो कुछ कहीं से लिंक उठा के हम दूसरी जगह डालते हैं ना तो नॉर्मली फोन में वो पूरा वो उसका दिखता है आइटम वगैरह भी क्या यहाँ पे सिर्फ वो लिंक पेस्ट हो जाती है बहुत वो दिखता ही नहीं है उसमें मेरे को तो वो एंड्रॉइड अपना पर ये तो उनको सही करना है मैकबुक में भी मैकबुक में वो ना डिफिकल्ट लगता है इसलिए अभी तक तो पेपर पढ़ने के लिए इधर से डाउनलोड करते थे वो प्रॉब्लम है वो हो सकता है पहले के टाइम पे जैसे लोग बोलते थे मैकबुक खुल जाता था तो ऐसे उसका जो ओएस है वो डेटा हो ही जाएगा ओएस नहीं विंडोज में ओएस का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा पता नहीं ऑफिशियल लगता है मेरे को पेपर पढ़ने के लिए बाकी का नहीं यार मेरे को पेपर पढ़ने के लिए क्यों लगता है क्या है इसमें भी एडोबी एक्रोबैट होता है वो बस सब हाईलाइट करके दे देता है सब सही है कहने की बात मेरा तो में उनका सुना नहीं रहा मेरा एक मैक है इधर इसमें क्या है नहीं मैं मैक को एटलीस्ट गुड इन्वेस्टमेंट कहूँगा बट आईफोन मतलब वो जेन्युइन हो क्या है इन्वेस्टमेंट देखा तो अभी आज तक समझ नहीं आया वो लैपटॉप में ऐसा क्या अलग होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया और बैटरी सराउंडिंग बैटरी अच्छा है बैटरी बहुत अच्छा है 5% में अराउंड 45 मिनट चलाता है सरप्राइजिंगली उन्हें फोन का बैटरी भी इतना ड्रेन नहीं हो रहा है आईफोन तेरा आईफोन ये पुराना वाला है ना आईफोन का ज़्यादा बैटरी नहीं होता ड्रेन बहुत होता है भाई मेरे बिल्कुल नहीं होता है बहुत बहुत बैटरी बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारा फोन होता जो भी मैं चला रहा हूँ बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं है बैटरी हेल्थ पे डिपेंड करता है कैसे चार्ज कर दो कैसे चार्ज कर दो ना 15 सीरीज का तो फट गया है बहुत मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आप इतना चलाते हो ना गलती का जब मैं लेने से पहले स्क्रीन टाइम मेरा 15 घंटा स्क्रीन टाइम हुआ तो क्या मेरा लेकिन ये है ये मतलब ये 16 प्रो मैक्स को बीट करता है कितना है स्क्रीन टाइम मैं दिखा रहा हूं बहुत 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 ज़्यादा ही है Okay, so let's see the correct answer. Yes. So the question is the word nervous relax falls under which affective state topology? So yeah, the correct answer is no. Correct answer is sorry. So correct answer is personality traits. Okay. Now, so this is not the correct answer. Okay. So effective state topology. So falls under which effective state topology? It falls under personality traits. You can go back to the slides and see. You can go back to the slides and check. So if you go back to the slide,
So you can go back to the slide and see that what's there. Yeah, I have already shown you now only, like before some time. Okay, so this is the second one. Please try it. लिटरली अगर कोई मेरे को खरीदना मिल जाएगा ना तो मैंने सोचा है ये तब तो लॉस नहीं यार तो 2 साल चला ही लो यार एकदम मतलब जब ऐसा हो गया कि नहीं रोना ही हो गया तब बेचो यार नहीं तो लॉस में था क्योंकि वो सर कल आपका ईयरफोन मुझे इतना कंफर्ट कोई यूज किया सर मेरे कंफर्टेबल नहीं होता यार मेरे को ऐसा साउंड क्वालिटी वगैरह नहीं हुआ है मैं बोलना नहीं चाह रहा था किसमें प्रो मेरे लिए तो ठीक है किसमें किसमें वो लिया है एयरपॉड्स हाँ हाँ मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा ये वाला हाँ ऐसा ही है ना ऐसे ही सेम ही है। मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे तो बढ़िया लगता है। कंफर्टेबल नहीं लगा मिलाया भाई मेरे को ठीक है सर मैं ये बता रहा हूँ आपका रीजन क्या है बोला नहीं मुझे तो चाहिए वो ही रीजन कल पता नहीं किसका माइक ही नहीं काम कर रहा संजीव सर गुस्सा हो गए मेरे को तुम ईयरफोन निकाल दो नहीं ये चीज मैंने ना जो भी वो वाला है क्या कहते हैं जो ब्लू वायरलेस वाला उसमें हर भी मतलब उतना अच्छा माइक नहीं था भाई मीटिंग आपका खत्म करेंगे तभी ना रेस्पॉन्स वन हो गया रेस्पॉन्स वन कर दो फालतू में पैसा खर्च कराया तुम लोगों ने मेरा। अरे क्यों आज जाएंगे ना अपन तो जाएंगे मेरे क्लास चल रहा है कितना बजे तक है अभी 8 बजे तक। अरे साला मतलब ये तो अलग है ना हाँ मुझे ये पूछ लेना कि जरूरत क्या है आप ऐसे बोल दो कि तुम्हारा शूज कहाँ है बट आ रहा है। लार्ज स्केल होता है ना बैंक में भी वो लार्ज स्केल होता है ना उसको वो उसका डिफरेंट हुई है ना कि पेपर में लिखा होना वो क्या बोलते हैं उसको रिजोल्यूशन इशू होता है स्मॉल गवर्नमेंट वो एडिक्वेट हो गया मतलब ये डिस्कशन आई ही मत सिंपल यही कि मतलब अभी एजुकेशन मतलब जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसमें ये Okay, so for this the answer is 1 2 3. Yes, you're correct. 1 2 and 3. Okay, so I am not explaining this, so as most of you have given the correct answer. Okay, so Saran is asking that, sir, handing out of vocabulary words, ambiguity in word meanings are also tokenization issue. Yeah, this is also a tokenization issue. Yes. Exactly. This is a tokenization issue. हाँ ठीक है So this is the next one.
आवाज आ रहा है। हवा? अरे भाई साहब घूम के आता हूँ। सुनो, ये पहला वाला Okay, so for this the correct answer is 1 and 3. Okay, the correct answer is 1 and 3. Okay, so please try the next one. फिर उसके बाद यहाँ नहीं वो हटा दिया वो ये हटा दिया ये लाइन पर अबे यहाँ भीड़ हो गई है बहुत। अरे भाई पूरा ट्रैफिक भर गया है इधर। क्यों पता नहीं, जा नहीं पा रहे होंगे ना हाँ ये उसकी ना नई ये ब्लू कलर की उसकी ना हो क्या नाम है कौन देगा कौन सा यादव एलविश यादव उसने एग्जैक्टली यही कलर की है ना तूफान है। सर कब दे रहा है सी वैगन
बानू का दिखाया मैंने सर बोलेंगे जी वैगन में मेरे लिए परफेक्ट जो मेरे लिए जी वैगन परफेक्ट है ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट नॉलेज एक्चुअली गिव दैट थोड़ा सा बोलते बोलते धूल हो जा रहा है तो मस्त रखो वहाँ का बोला था पूरा इसके ऊपर धूल मिट्टी हो गया था पूरा टीपुल बना हमने बोल लाइट चली गई है अरे भाई साहब शीशा न टूट जाए नहीं लाइट चली गई ओ ये धूल बहुत है बट से ऐसे कर लो Okay, so the right answer for this is 1 and 2. Okay, that is aspect display, sentiment positive, opinion cool. Okay, now let's try this one. मैं तो स्केलिंग ही डाल रहा हूँ ना वरना प्लस ही डाल जाऊँ मैं स्केलिंग डाल रहा हूँ समझे तो क्लैरिफाई कर देते हैं कि स्केलिंग ये ऐसा कर देते हैं कि भाई आंधी आ रहा है, देखने चलो। अरे बहुत धूल उठ रहा है बट मैं और
बंद कर दो क्लास कोरस है यहाँ पे आंधी आ गई है रेक्टिफाई बोलेगा ना इट्स मींस दैट सारा जब थोड़ा सा खोल देते हो यहाँ तक धूल आ जाती है सिंपल ऐसे लिख दीजिए कि थैंक यू फॉर द सजेशन वी विल मॉडिफाई मेरा रूम का खिड़की खुला हुआ है। वी वांट टू से दैट दैट इंस्ट्रूमेंट इधर भी धुल धुल हो गया भाई, इधर भी। ये नीचे पूरा यहाँ से गया है नहीं assumption नहीं since रुको रुको Okay, so the correct option for this is option 2. So try it. So we have seen the theory. Okay, so the correct option for is the option 2, to make it comparable across different word. Okay, so I have already first described this to you. Okay, so can you try this, that the word loving and beyond falls under which affective state topology? It's easy. So loving is attitude, beyond is mood. Okay, so can you find this one? So this will take time. Okay, इतना कौन कैलकुलेट करेगा कि इसके बदले और के बदले तो रहेगा ये के बदले ये रहेगा वो नहीं उनको मैं जानता हूँ Right. ग्राफिकल मॉडल जो है यहाँ पे
हटे नहीं होल्ड लो आप होल्ड सेम उसमें लास्ट वाला ग्रेविटी डिटेक्शन की बात वो इधर हाँ हाँ चलते ये मैं हर्ष के लिए भी रुका हुआ था हाँ अच्छा आ जाओ इधर हो तो स्मूथ सिग्नल पे खेल लेंगे जो मिलेगा वो वरना जिम कर लेंगे ग्राफ रनिंग जरूरी है अरे चलते तो जाके देखते तो आते खा लेगा तो खेल लेंगे ठीक है चलेगा
क्वेश्चन नहीं है इसका तो इधर है देखा है कुछ नहीं होगा जो कोड नहीं रखता है आपको क्या लिख दो ना कर दिया लौट के आ जाना निकल के लिए एक आध बैठ के से वही 5,000 रुपये या 7,000 सीधा 10,000 लार्ज बोले ना उसको लार्ज के 10,000 लार्ज को छोटे समझते हैं सही बात है कि नहीं आती आजकल लोग 10,000 को नहीं समझते भाई मिलियंस और बिलियंस की बातें हो रही है तो क्या होगा आप इन्होंने जैसे 2,500 रुपये डाला ही हुआ है 2,500 से 10 किया तो मैंने कहा 10 नहीं सीधा 2,500 से 25 तक लेके जाओ ऐसा करता है अरे नहीं मतलब जेन्युइन बोल रहा सेम डेटा बार-बार जनरेट होगा एक मान से एक मीटर उसको क्या लेना देना करो उसके बाद पता चलेगा मुझे इधर बैठने कटना चलो लेवल डाल के देखिए ये उल्टा स्केलिंग हो गया यहाँ पे वो करके रखिए ना उसमें क्या है Okay, so the correct answer for this 1 and 2, yeah. So in Iralius mood, where the word may not be reliable, so the question was which of the following are true regarding indicators of Iralius mood. So 1 and 2 are the correct option. Okay, so this is the next one. हमारा 2,500 तो ऑलरेडी है नहीं भाई नहीं 10 तो निकाल लिया 25 निकाल ज़्यादा सब हाँ नहीं जब लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं ना तो ठीक है 2.5 से 5 जाएंगे हो गया कि क्या लार्ज स्केल है सर और क्या है मतलब सर को बिलियंस पे जाओ क्या बिलियंस बिलियंस एक एमेज़न पे करके है एमेज़न प्रोडक्ट्स उसके डेटा वो भी आधा बिलियन ही है उसके ऊपर भी एक डेटा कोई जो के ऊपर नो डेटा इतना अरे नहीं बट अब ये नहीं समझ रहे हो ये तो एक्चुअल कंपनी है ये लोग तो बिलियंस पे ही काम करते हैं ना तो अगर आपका एल्गोरिथम सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं रखना है तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा कितना नंबर क्वेश्चन है चलो अभी चलो Alright. देखिए कॉन्फ्रेंस को लीजिंग लिमिटेड वाला देखो ना रिवर्टर वाला तो नहीं बाकी कोर्स के इधर लिमिटेड वाला रिवर्टर वाला कौन क्या क्या मेरा रिवर्टर वाला हाँ आईटीसी ने लिखा आई कौन है ना आईटी कौन है नहीं आई कौन है 25 अबे आई कौन मेरे कॉलेज का ही है कोई 51st बार हो रहा है हाँ बड़ा कौन था इसमें भाई कितना जोर से ऊपर चला है वाला टाइप करके वो आई कौन है वो आई एम कौन आई ने उसने आई कौन बोला अच्छा आई है कौन है ये अच्छा कॉन्फ्रेंस है भाई Yes, the correct answer is all of the above. इलेक्ट्रॉनिक्स का है Okay, next, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डालना let's see this one. कौन सा एक्सेप्ट हो गया तो आई कौन अच्छा भाई तू मत रे वो भी सर के बोले
Okay, so for this one, so it is asking that which of the following is are false. The question is about the word bad problem represent a negative emotion. Love, sweet belong to the class of effective processes, and the word uh, perhaps and guess don't belong to cognitive processes. And relaxation is an example of low arousal and high pressure word. Okay, so what we can see from this from the which of the following is we have to find that which of the following are false. So if we see the LIWC or linguistic inquiry and word count, this corpus, so we here the affective processes are negative emotion and positive emotion. In negative emotion, that are bad, weird, hate, problem, tough, and in positive emotions we have love, nice, sweet. In cognitive processes, it is tentative or inhibition. Tentative means maybe, perhaps, guess, and inhibition means blocks and constants. Okay. So if you see the valence aroused dimensions, where in x-axis we have the arousal axis, and in the y-axis sorry, in x-axis we have the valence, and this axis is about the y-axis about the arousal. Baapre. In valence we have anger and sadness. In arousal axis we have excitement and relaxation. Okay, so this is the negative side and this is the positive side. Okay, so if you go with the axis also, the positive x-axis and positive y-axis, it is the positive y-axis, positive y-axis, but negative x-axis. Okay, it is the negative in both valence and arousal. Okay, so this is the overall concept. Okay, so what should be the correct answer? So the correct answer, which one is false? So bad or bad problem represent the negative emotion. Yes, this is correct. Laugh, sweet belongs to the class of affective processes. This is also correct. Perhaps, guess don't belong to cognitive process. If you see here, perhaps, guess, this is the tentative or cognitive processes. So which statement is the correct? False. This one. So 3 is our correct answer. Okay. So which of the following is correct about Turner algorithm? Let's see.
Okay. ये क्यों 1 में जाना ना ये सेम ही है उसका ही तो वो मैंने डायग्राम बनाया था एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर क्या देख रहे हो ना ये देखो 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 तुम्हारा 3.4 पर है ना हम लोग का प्रेडिक्शन ओरिजिनल है तुम्हारा 3.5 डिफरेंस कितना है 0.1 जितना छोटा आएगा उतना ही रहेगा उल्टा समझा ऐसे ही वो इंडिविजुअल सोचेंगे बट इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ना क्या हुआ हीरो ही कॉन्फिडेंस घटिया देना नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसे रिव्यू चाहिए नहीं Okay, so the correct answer for this is
one, because extract phrasal lexicon from reviews, learn polarity of each phrase and rate review by average polarity of each phrase. So one is the correct option. Okay. Yeah, so for this one, let's see. So yeah, so the question is about sentiment lexicons can be learned using intuitions such as same polarity word are connected by and, opposite polarity word are connected by but. Yes, we have already seen this in our what we are discussing the summary. Yeah, so what we are seeing that adjectives conjoined by and have same polarity like fair, legitimate, corrupt, brutal, and adjectives conjoined by but do not mm, like fair or brutal. So both one and two are correct option. So I think this was our last questions for today's class. Okay. So what I'll do that yeah. Hmm. So let me add some more questions here. मतलब ये क्या दिखा रहा है इसमें क्या मांगा था इसमें क्या नहीं मांगा हाँ मीन स्क्वायर पर ना एक ही वैल्यू लेके तो मीन स्क्वायर इन दोनों के बीच में डर ना इसको मीन स्क्वायर को कैसे निकालना आपने लिखा है ना 5 बार है हाँ पांच बार तो कोई डिफरेंस होगा तो 5 बार तो ही नहीं
Okay, can you try this out? And ये वाला जो वाई Yeah, for the exam, look into the mostly look into these topics which has. So what you have to do that, so there are 12 week we have done this session. So there are 12 assignment questions and 12 previous year questions. So just what you do that, learn the algorithms very well, that how the algorithms are there. There are some of that algorithms has some calculation, so do that calculation and carefully revise the previous year questions and whatever we have solved in the class, like the assignment questions also, the topics will be covered mostly from the assignment questions. Okay, so carefully solve the assignment questions. So so I have three more questions. After that, I think we can finish. So in the question 1 and 3. So are you talking about question 1 and 3? इसका और क्या इसका और कुछ नहीं So Karpagam. Yeah. So are you talking about, no sir, answer to last question. Answer to last one. टाइप को इनपुट करके This one, this one. बेसलाइन Are you talking about this one or डाल दे something else? तो व्हाट्सएप पर एड्रेस लिखा So I think there was an ambiguity in. नहीं होगी डेफिनेटली ऑनलाइन पे बोले ऑनलाइन After this, या ऐसा करिए उसको शेयर कर दीजिए सर के पास हाँ मैं शेयर किया हूँ आप तुरंत पढ़ें और वो एक्सपेरिमेंट मैं कर दिया हूँ आप क्या इंटरप्रेट करिए कल अच्छा, रिव्यू लिखने के बाद सर को भेज रहे हो क्या? कंप्लीट नहीं हुआ आज का। तुम्हारा कैसा है स्कोर कितना है अबे इसका हम लोग ज़्यादा है 6-5 छः पाँच तो मतलब 3 बंदे को 4-5 मिनट पढ़ाने लायक नहीं है लायक नहीं है मतलब कि क्या नहीं वो मतलब प्रोड्यूस है वीडियो कैसा है और 3 दिए ये वाला सबसे घटिया है मतलब तुमने तो गलती भी कर दी जो आदमी सबसे ज्यादा गलती दिखाया तो वही होता है लेकिन डिबेट ना आप भेज दी सर परसों है कल जैसे भी करेंगे बस यही है कल तो बता दोगे कर लियो सर कर लिए। आपका दो भी तो 3 बहुत सही है, बस वही। Acha. Okay. So here the answer is 1 and 3. Yeah. So 1 and 3 is the correct option. So I don't have the right permission here. So 1 and 3 is the correct option here.
Okay, so I have this one and this one. You can try to solve these two, and then you can leave the meeting if you want. Okay, this one and this one. So later, so you solve it later. I will. The meeting will be going on, so I'll write the answer in the chat only. और तुझे कब तक टाइम क्या बोल संडे तक मंडे इवनिंग तक. मंडे इवनिंग कैसा हुआ 12 ठीक. तारीख 5:30 12 तारीख तो ठीक है. कल 12 तारीख कब है कल कल. कल 12 तारीख है ना हाँ 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 तो संडे इवनिंग तक होगा हाँ हाँ हाँ. संडे 5 बजे तक तो क्या होता है वो रिव्यूअर रिस्पांस होता है ना क्या वो भी है उसके जो उसके अंदर हाँ हाँ. क्या लिखूं क्या बोल रहा है? मैं पूछ नहीं रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ ना सबको कल सबमिट करने के बोलूँगा हाँ हाँ. तो क्या कल सबमिट करोगे तो रिव्यूअर के लिए एक दिन रहेगा. पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ना तो पीडीएफ तो मेरा खुद का यार
पेड है। हेलो, मैं मैं पूछ रहा हूँ कि पेड है वो। ओके ओके, तो द्रोणागिरी के कवर्ड में डाल दीजिए। हाँ बताओ। 290314। 290314।
Okay, so what is the correct answer for this? Yeah. So the correct answer for this one. So first see this one. So for this one, so the correct answer is 1, 2, and 3. Okay. 1, 2, and 3. Okay. And for this one, the correct answer is 1 and 2 because where is not a aspect term. Okay. And in this one, so here the correct answer is 1 and 2 because where is not a aspect term. Okay. So this is not aspect. Others are true. And for this one, the correct answer is 1 and 3, like environment and price. Okay. So polarity shift technique is performed to handle negations and intensifiers. Oh, sorry. So in environment, yeah, in environment the correct answer is all 1, 2, and 3. So price is an implicit aspect basically. Okay. So here all are the correct option. Okay, fine. So this was all from my end for this week. Okay. So this was the last session for this NLP class. So I think we will meet on some day. Okay. So thanks all for joining and taking the class. Okay. Thank you everyone. Thank you everyone for joining. Okay. So all the best for your exam. Okay. Uh, Maybe we'll meet in some.